Hello friends, welcome once again. In this video, we will take the series OLQ Decoded, and that we are going to take one of the OLQs, that is courage, साहस. Now इस आर्ट्रैक का, इस बुक का मैं रेफरेंस बार बार देता हूँ. लीडरशिप आर्ट्रैक का पब्लिकेशन है, इसमें भी करेज का रेफरेंस है. तो हम पहले एसएसबी के ओएलक्यू के देखने से पहले हम देखेंगे कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है. एंड बिफोर दैट वी विल आल्सो सी व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ करेज. इट सेज द एबिलिटी टू कंट्रोल फियर in a situation that may be dangerous or unpleasant. अप्रिय खतरनाक स्थिति में भय को नियंत्रित करने की क्षमता, साहस, हिम्मत, बहादुरी. तो भय को नियंत्रित करने की क्षमता, ये मिलिट्री रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. बिकॉज आपको पता है ऑल मिलिट्री ऑपरेशन कम्स विथ लॉट ऑफ फिजिकल लाइफ थ्रेटनिंग हैजर्ड्स. और इसमें अगर आपका एज अ लीडर इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द फियर विद इन यू and manage the fear around you, you will not be a successful leader in military situations. Now, before we start, let me give you an information. Next composite batch, SML and AFOSOP, 2 weeks and 4 weeks, is starting from Monday, that is tomorrow onwards. 2 weeks ka batch is from 18 January 2021 to 30th January 2021, and 4 weeks is from 18 January 2021 to 13th February 2021. You're most welcome to join that. To register, please WhatsApp me at 827-5577-650. WhatsApp करना and I'll share you the details. इस information को अपने दोस्तों के साथ भी share करना so that others also benefit. This is an online batch. 2 weeks का SML and 2 weeks का AFOSOP. You can take it together or first finish with the SML and go for the AFOSOP. So the options are available with 2 weeks and 4 weeks. For details, WhatsApp me at 827-5577-650. Let's come back to this book, Leadership by Artrack. 3 essential qualities of character. Leadership के 3 essential qualities के बारे में बात करता. मैं इसको जल्दी से इसको पढ़ता हूँ. A very large number of qualities determine the character of a person. I already told you that आप SSB में जा रहे हो. SSB is a personality based selection and there cannot be any personality development without character development. वो वीडियो देखना. So there are a large number of qualities that determine the character of person. Scores of qualities have been listed in the literature on leadership. However, the core qualities which are really important are invariably found in the character of all outstanding leaders and are shown in the universal inner structure of good leaders. ये जो universal inner structure of good leaders, ये मैंने आपको नहीं बताया है, but if you feel that these are benefiting you, आप मुझे comment box में लिखना, मैं उसको डालूंगा. It is a diagrammatic representation जो कि इस book में दिया हुआ leadership के आर्ट्रैक के. It will be useful, so put your comments and then I'll put that, share that with you. है ना? So we have discussed the foundation quality of character of a good leader, selflessness, in chapter 3. We shall discuss in this chapter the 3 qualities of character essentials in a good leader. These are courage to decide, साहस, निर्णय लेने का साहस, willpower to persist. persist मतलब in spite of obstacles and setback, इच्छा शक्ति कि उस चीज को छोड़े बिना उसके ऊपर लगे रहना. जिसको डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं SSB के OLQ की भाषा में. एंड इनिशिएटिव टू बी ए सेल्फ स्टार्टर. अ लीडर हैज टू बी सेल्फ स्टार्ट, नॉट किक स्टार्ट. तो ये 3 कैरेक्टर क्वालिटीज बताया हुआ लीडरशिप में, जिसमें कि आज हम करेज के बारे में बात करने वाले हैं. नाउ करेज इज द मोस्ट एडमायर्ड ह्यूमन वर्च्यू इन ऑल सोसाइटी. To be a man means to be courageous. So you as a candidate, you have to be courageous. Let's see what are the other dimensions of this. The most important act of courage for a leader is to make decision. So one of the, as a leader, you have to constantly take decision, and one of the courage that you demonstrate is in your ability to take decisions, appropriate decisions at the right time. No action can start unless a decision is made. So unless you make a decision, there cannot be any initiation. To make a decision means being accountable for success or failure. So every decision comes with a consequence, and as a leader, you not only take the decision, but you are also accountable for that. So you have a choice till you take a decision.
So the choice is there till you take a decision, but once a decision is taken, it will come with a consequence and you should be held accountable for that. That responsibility, that ability to take responsibility for your decisions, whether it is success or failure, that's of paramount importance. That is why a large number of people procrastinate. So one of the reasons for people procrastinating is that the fear of failure is so much कि उन्हें लगता है कि टालते रहो. So procrastination is a big problem even in the SSB candidates. है ना, people want to procrastinate मतलब deliberate delay. मतलब we have intention to get recommended, but we are not taking the right action. It is important that decisions are made with care. So when decisions are made with care and after fully weighing the pros and cons of the available option. Now this is, appropriateness of the decision arrived at. Speed of decision में लिखा हुआ appropriateness. This will only come when you take decisions with care and after fully weighing the pros and cons. Now if you remember in the last 2-3 videos where I have shown that video जहाँ पे उस लड़के ने कहानी लिखा है, don't knock the door Raja, come directly inside Raja. Now that decision of writing such a story has not been fully weighed. उसने ऐसे कुछ भी सोच के जो अंदर से कचरा है वो निकल दिया. इसका मतलब क्या है? There is lack of inner clarity. There's a lot of lust inside. There's a lot of kachra inside, and that is coming out. So definitely, you while writing, you have not taken care and you have not weighed the pros and cons of such response. क्यों? Because the mind is not in your control. But even after that, the best option is seldom clear. In military situation, in fact, the best decision also will not be very clear because of the ambiguity of the operational situation. Most decisions have to be made in an atmosphere of uncertainty of the outcome. In military, this uncertainty is called the fog of war. मतलब युद्ध में जो अनसर्टनिटी होता है, जो फॉग होता है, the confusion होता है, उस confusion में military leaders are supposed to take decision, and that will only come when you have the courage to decide even when all inputs are not very clear. We have to remember that nothing moves or happens without a decision. That's why it is said that a bad decision is better than no decision at all. In fact, the minds of a leader, ये जो वीडियो है by Dr. मानस के मंडल, वहाँ पे उन्होंने 3 टाइप के डिसीजन मेकिंग के बारे में बोला. वहाँ पे बेस्ट डिसीजन, राइट डिसीजन एंड गुड डिसीजन के बारे में बोला. मिलिट्री लीडरशिप इज अबाउट टेकिंग द right decision at the right time rather than taking the best decision, because best decision is not possible in a war-like situation because of the confusion that it creates. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. डिसीजन बाय ए सब लेफ्टिनेंट, मतलब लेफ्टिनेंट, सबल्टन है ना, लेफ्टिनेंट साहब और कैप्टन साहब. डिसीजन बाय ए लेफ्टिनेंट टू रश forward at a firing LMG during the split seconds of the enemy's magazine changing and throw a grenade to silence it is an example of physical courage. तो इन्होंने भी courage को 2 में बांटा हुआ. पहला इन्होंने physical courage का एग्जाम्पल दिया है जिसमें एक लेफ्टिनेंट या कैप्टन साहब जो है, जब दुश्मन LMG का मैगजीन बदलता है या अपने वेपन का मैगजीन बदलता है, उस 5-10 सेकंड के गैप में अपने ट्रंच से निकल के जो भागता है और उनके ट्रंच में जाके ग्रेनेड फेंक देता है, दैट्स एन एक्ट ऑफ फिजिकल करेज. सो ये करेज का एक पोर्शन है, एक पार्ट है, एक फॉर्म है विच इज फिजिकल करेज, जिसका ये लेफ्टिनेंट के थ्रू एग्जाम्पल दिया हुआ है. सो इसका एक अगर आपको लाइव एग्जाम्पल चाहिए तो विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर. नाउ ही न्यू दैट द ओनली वे they can reach the top of that peak whichever they wanted to capture was that he has to run up the hill and reach there before he gets shot by them. And he was actually shot, but he ensured that physically he covered that distance and lobbed the grenade और उनको neutralize किया before he got himself martyred there. Now that's an act of physical courage by Vikram Batra, ye dil mange more, है ना. Similarly, Sandeep Unnikrishnan Hotel Taj में don't come upstairs, I will handle it is an act of physical courage where he risked his own life to save his हवलदार हो जिसका भी जान बचाना था. सो इसको समझने के लिए आपको 2 टर्म्स दूंगा. एक है ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर एंड दूसरा है प्रो सोशल बिहेवियर. मुझे इन दोनों के ऊपर
कमेंट डाल के बताना कि ये इसका मतलब क्या है, नेट पे सर्च करना. एंड आर्म फोर्सेस में military leaders have to have this altruistic behavior, otherwise you will not be able to fit into the military requirement. You may become a good civil servant, but you cannot become a military officer if you don't have altruistic behavior. So I want to know ये क्या है, इसको comment box में जरूर डाल के लिखना. Now इसी में आगे एक example दिया है. The decision by General Eisenhower to launch Operation Overlord as planned on 6 June 1944 when the weather report of a storm predicted a disaster for the ambitious assault on Europe is an example of moral courage. A good leader must have both. तो दो में कर दिया, दो में courage को split कर दिया, physical courage and यहाँ पे moral courage. So he was a US general, General Eisenhower, and इन्होंने क्या किया था, 6 जून 1944 को एक एम्फीबियस ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसको कि ऑपरेशन बैटल ऑफ नॉर्मैंडी भी बोलते हैं. इसका कोड वर्ड था ऑपरेशन ओवरलोड. नाउ दिस वाज टेकन इन अ वेरी वेरी बैड वेदर कंडीशन, जहाँ पे कि प्रेडिक्शन था कि ये ऑपरेशन फेल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन. बट जस्ट बिकॉज द सरप्राइज एलिमेंट वाज हाई, ही took a decision to launch this operation in spite of the weather reports being contrary, and that was a moral decision because अगर ये गलत हो जाता, so many people would have lost their life and he would have been held responsible for that, for which he was morally prepared, but he yet launched that operation and became a good huge success, है ना. So आप बैटल ऑफ नॉर्मैंडी को पढ़ना, ये फ्रांस में ये जगह. So that was an act of moral courage. Similarly, if you want to see the moral courage from one of the Indian journals जिसके बारे में बहुत रेफरेंस होता है, वो है जनरल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने 1971 वॉर में इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में उन्होंने बोला कि वी नीड टाइम टू प्रिपेयर, और उन्होंने अपना कुछ महीनों का टाइम मांगा बिफोर दे कुड लॉन्च ए ऑफेंसिव इन द ईस्ट पाकिस्तान एरिया. एंड आपको पता है वो, अगर आपने इनके बुक पढ़े होंगे, तो इंदिरा गांधी को इनिशियली ठीक नहीं लगा बिकॉज हाउ कैन ही रिफ्यूज the Prime Minister of India's orders, but he did that. So that's an act of moral courage, and finally we won that operation and the Bangladesh was created. 71 operation की बात कर रहा हूँ. So courage को आपने देखा कि इस बुक में दो पार्ट में बांटा हुआ है, physical courage and moral courage. So what Vikram Batra and Sandeep Unnikrishnan did is physical courage, more of physical courage. Of course, the moral element will always be there. And what Eisenhower did, or what General Sam Manekshaw did, was an act of moral courage to say no when that was a requirement he felt, even when the bosses were not very happy. That courage to say no. Similarly, you as a candidate, when you go to the SSB, you are also assessed on this quality. So factor 4 में 14th OLQ is courage, and इसका definition जो SSB का वो है, the ability to appreciate and take purposive risk willingly. The ability to appreciate and take purposive risk willingly. It includes the ability to meet appreciated danger, spirit of adventure, an enterprising spirit, and a willingness to or desire to dare or risk a hazard. है ना. Capacity to keep oneself composed in adverse situation and enabling one to be steady in facing and handling such situation. So ये बड़ा simple सा definition है, the ability to appreciate and take purposive risk. Appreciate, not बेवकूफ़ों वाला. So that kind of an ability. So इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दोनों टाइप का करेज देखा जा रहा है आपके अंदर एज अ कैंडिडेट, फिजिकल करेज एज वेल एज मॉरल करेज. फिजिकल करेज हर टेस्ट में कैसा होता है वो हम जब क्लास में आओगे हम उसको डिटेल में बात करेंगे. नाउ फिजिकल करेज डेफिनेटली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्म फोर्सेस, बट आर्म फोर्सेस लीडरशिप में बिसाइड्स फिजिकल करेज, मॉरल करेज टेक्स अ बिगर दैट. सो कौन सा, इट इज लाइक अ तराजू, both are important, but leadership, in military leadership, moral courage becomes extremely important besides physical courage. You cannot have one at the cost of other. Both needs to be there. और SSB में से टेस्ट करने के लिए पूरे टेस्टिंग में GTO psych interview में there are various ways to do that. I'll just take a reference of psychological test. So for example, जैसे ये है. Now clearly you can see there are 3 characters here.
दिस पर्सन इज मिडिल एज, दिस पर्सन इज ऑल्सो समवॉट 30s में होगा, ये थोड़ा से बूढ़े लग रहे हैं, थोड़ा बाल सब गंजे उंजे लग रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज एन एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड एंड इनके हाथ में एक चाकू है. सो देर इज अ थ्रेट टू दिस पर्सन एंड प्रॉब्ली दिस पर्सन, एंड कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में मॉरल करेज से ज़्यादा फिजिकल करेज एक्टिव इन्वॉल्व होगा. तो आई विल लाइक टू नो कि अगर आपको ये पिक्चर दिखाया जाएगा तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे. ना आपको एक चीज़ पता होगा, आप सबको पता है स्टोरी में, कहानी में टीएटी में हीरो बनाना और सुरेश रमेश लिख के करेजियस एक्ट करना. इट्स नॉट अबाउट यू राइटिंग अ गुड टीएटी स्टोरी, इट्स अबाउट द लॉजिक, द फ्लो इन विच यूर राइटिंग एंड द वे योर माइंड इज ऑपरेटिंग. एवरीबडी नोज इसमें आप इसको इन्वेरिएबली इसको हीरो बनाओगे और उसको कैसे ओवरपॉल करोगे, ये तो आप करोगे, बट द वे यू स्ट्रक्चर योर स्टोरी, द वे द माइंड ऑपरेट्स, उसको हम एविडेंस के रूप में लेते हैं इंटरप्रिटेशन करने के बाद कि आपके अंदर ये सच में है या आप ऐसे OLQ दिखाने की एक्टिंग कर रहे हो, स्प्रिंकल्ड OLQ. सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू राइट अ स्टोरी ऑन दिस एंड पोस्ट इट in the comment box, YouTube comment box में. Second is this picture. Now look at this. You can see two hands coming out of probably a water body. तो यहाँ पे क्लियरली दोनों हाथ देखने से ऐसा लग रहा है वो मदद के लिए चिल्ला रहा, द पर्सन इज इन डिस्ट्रेस. सो नेचुरली ये तो हीरो नहीं होगा. तो इस पिक्चर में इनवेरिएबली यू विल ब्रिंग एन एक्सटर्नल कैरेक्टर, एंड वो एक्सटर्नल कैरेक्टर जो है ही हैज़ टू हैव स्ट्रॉन्ग मॉरल फिजिकल करेज, एंड ऑफ कोर्स अगर स्विमिंग नहीं पता और वो कूद जाए पानी में तो बेवकूफ़ी है, देन इट इज़ नॉट पर्पसिव रिस्क, then it is foolhardy. So it has to be calculated risk, and of course there has to be a moral angle to it, क्योंकि आपको लगना चाहिए I have to save him. अगर आपको लगे मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मरे तो मरे, then you will not be able to do it. So हो सकता है आपके पास moral courage हो, लेकिन physical courage आप इसलिए implement नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको swimming नहीं आता. तो naturally आप swimming नहीं जानने के कारण चाह के भी कुछ एक्टिविटीज नहीं कर सकते. सो यू हैव टू टेक सर्टन अदर कोर्स ऑफ एक्शन. सो आई विल लाइक टू नो क्या समझ में आया. प्लीज राइट अ स्टोरी एंड पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट्स सी हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस, एंड विल सी द लॉजिक इन आवर क्लासरूम डिस्कशन. सिमिलरली अगर ये दिखा दूं तो इसमें डेफिनेटली फिजिकल करेज बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे आप फिजिकली माउंटेनियरिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एंड मॉरल करेज विल ऑल्सो प्ले बिकॉज एट वेरियस स्टेजेस यू मे एनकाउंटर वेरियस challenges, and in those challenges the way you operate or conduct yourself, maybe you have to lift somebody physically or do something else, XYZ, sharing your oxygen with somebody else or whatever. So but यहाँ पे definitely इसका पलड़ा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, बट दिस इंक्लूडेड बोथ. तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इस पर भी एक कहानी लिख के मुझे पोस्ट करना. नाउ एक और पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला. नाउ लुक एट दिस, यू कैन, आई डोंट नो व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर. जरा ध्यान से देखना इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू इस पिक्चर को जरा 30 सेकेंड ध्यान से ऑब्जर्व करो, एंड देन pause this video and write a complete 4 minutes में एक TAT का response लिखो. What led to the situation, what is currently happening, and what is the final outcome. I want you to post this here, and tomorrow once you come here we will discuss in the class as part of a PPNDT and TAT discussion. Tomorrow next week is psychological test, so उसमें हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. तो जरा इसको जरूर पोस्ट करना. मैं एक सैम्पल स्टोरी दिखाऊंगा. The sample story is written by a CDS candidate. CDSE का कैंडिडेट है, एंड हिज फादर इज ए ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स. तो बंदा आर्मी बैकग्राउंड से, फौजी बैकग्राउंड से, CDS के लिए जा रहा था. आई डोंट नो व्हाट अटेम्प्ट इट इज. सो लेट अस सी इस बंदे ने क्या लिखा है. सो जब इसको PPNDT में दिखाया था तो उसने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2 लिखा, जेंडर मेल लिखा, एज 23 एंड 24 लिखा, मूड दोनों का पॉजिटिव लिखा. नो ये पता नहीं क्यों लिखा है. एंड देन एक्शन या टाइटल ऑफ द स्टोरी लिखा, ब्रेव एक्शन इन द फेस ऑफ एनिमी. नाउ आप लोगों को पता है कि इस बॉक्स को जो भरना है वो इस तरीके से नहीं लिखना है. इसको भरने का तरीका पिछले वीडियो में दिया हुआ, तो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली वॉच दैट. व्हाट इज ऑफ इंटरेस्ट इज ब्रेव एक्शन इन द फेस ऑफ एनिमी. टाइटल ऑफ द स्टोरी पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई एनिमी के प्रेजेंस में कोई ज़बरदस्त एक्शन लिया हुआ है. एंड आई एम श्योर
as part of that we will be able to see the definition of courage में जो भी एलिमेंट दिखे हुए इसके ट्रेसेस इन द स्टोरी। तो हम इसको देखते हैं, मैं इसे पढ़ूंगा और आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इन पुंछ, JNK सेक्टर की कहानी है। इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इन पुंछ, कैप्टन राजीव ठाकुर with Lieutenant Rajat Kapoor had lost their troops and nearest camp was 5 kilometers far from there. They both were facing very difficult condition as it was very cold and dense forest. Suddenly a bullet of terrorists had hit Captain Rajiv's knee and Lieutenant Kapoor saw some terrorists coming at them. Due to injury, Captain Rajiv could not have moved, so Lieutenant Kapoor put him at his shoulders and rushed towards the camp. But as they were only 100 meters away from camp, Lieutenant Kapoor also got a bullet on left hand, but he not stop at all. And at last he reached the camp successfully. Everyone appreciated their brave action. So this is the brave action. So brave action in the face of enemy. So I've read it. I will not do interpretation. I want you to do this interpretation कि साइकोलॉजिस्ट ने ये परिस्थिति दिया था, इस परिस्थिति को आपने अपने मनस्थिति से प्रोसेस किया और उस मनस्थिति या आप कैसे सोचते हो उसका रिजल्ट है ये आपका रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया। सो परिस्थिति प्रतिक्रिया बीच में मनस्थिति, बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस, और आपने ये फ्रीडम ऑफ चॉइस लिया है। एंड इस फ्रीडम ऑफ चॉइस में डेफिनेटली आपने ब्रेव एक्शन दिखाने की कोशिश की है, ब्रेव एक्शन इन द फेस ऑफ एनिमी। द स्टोरी वी हैव ऑलरेडी रेड इट। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि स्टोरी को ध्यान से पढ़ना और कैप्टन रजत, लेफ्टिनेंट रजत और कैप्टन राजीव ठाकुर का ब्रेव एक्शन इन द फेस ऑफ एनिमी, क्यों ऐसा टाइटल दिया है, क्या एक्ट ऑफ ब्रेवरी है, what were the circumstances, what was the expectation, how did everybody appreciated, why everybody appreciated them, and इसके ऊपर जरा मुझे कमेंट्स लिखना, मैं इसके आपके कमेंट्स के बेस में फिर आगे बताऊंगा। एंड फिर हम देखेंगे कि what is the expectation, what have you conveyed, और इस कम्युनिकेशन को जो कि आपकी नज़र में ब्रेव एक्शन इन द फेस ऑफ एनिमी है, फ्रॉम ए मिलिट्री पर्सपेक्टिव जब हम इस रिस्पॉन्स को देखते हैं तो क्या इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, एंड क्या ये डिज़ायरेबल है या है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं, ऑल दोज थिंग्स विल सी। एंड दिस बॉय इज ए एफोस ऑफिसर सन। सो आई वांट योर कमेंट्स ऑन दिस, एंड करेज के रेफरेंस में बताना कि फिजिकल करेज as well as moral courage, दोनों के ऊपर कमेंट्स डालना, बिकॉज इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ यू अंडरस्टैंड दिस रिस्पॉन्स। बिकॉज अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, ओनली देन आप अपने रिस्पॉन्सेस को समझ पाओगे। इससे पहले कि साइकोलॉजिस्ट आपके ऊपर एक इंटरप्रिटेशन करे, आपकी सोच को समझे, आप खुद अपनी सोच को समझो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो दोबारा एक बार इन्फॉर्म करता हूँ, द नेक्स्ट कॉम्पोजिट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, दैट इज़ 18 जनवरी से लेकर 30 जनवरी, दैट्स अ 2-week बैच, एंड 18 जनवरी से 13 फरवरी इज़ द 4 weeks बैच। इन ऑर्डर टू रजिस्टर प्लीज़ व्हाट्सअप मी एट 8275577650, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड होप टू सी यू सून। एंड आई एम श्योर दिस वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू। कमेंट्स ज़रूर लिखना सो दैट आई गेट अ फीडबैक कि इन वीडियो से क्या फ़ायदा हो रहा है। एंड once you join the class, we'll discuss more about it. Thank you and may God bless you. Thank you very much.